Any question, any doubt from your end? Okay, so I'm not getting any question. Yes, ma'am. Ma'am, Yes. that last slide, that application and case studies one, that is being given for information purpose, or will that be coming on MCQs also? GIS tool, GIS application and case studies. Yes, ma'am. Yes, ma'am. It is the part of the syllabus. Okay, ma'am. Somebody else was also, yes. Yes, ma'am. Ma'am, can you please explain one more time for the portion in topological data model, the R coordinate data and polygon topology, node topology, the specific that type of portion? Okay. Okay, I will explain that one again. Okay, ma'am. Thank you. Yes. Anyone else? You can tell me all the problems and thereafter I will tell the solution of everyone, or I will describe the things again later on. Megha, but Narhari, are you saying something? Because you are on unmute. You are not on mute, but your audio is not coming. Yes. Narhari, your audio is not coming. Any other doubt? Okay then. So there is one doubt regarding the topological data model. In vector data model, we have learned two types of data model. First one was the spaghetti data model and second one was the topological data model. Okay. In spaghetti data model, the things are very simple. You just need to note down the ID number. Okay. For point, line, polygon, just ID is required. And in the second column, the coordinate. For the point, it will just a single coordinate. For the line, there will be a series of coordinate. For the polygon also, there will be a series of polygons, coordinates, where first and the last one are same. Okay. So this one is a spaghetti data model, which is a very basic data model. The best part of this spaghetti data model was that it is very easy to store. It is easy to retrieve the data from such type of data model. But the problem is it is not containing any information regarding the topology, what is in the left, what is in the right, which feature is inside the another feature. No such information is there. Therefore, if you have to perform, suppose if you want to perform a shortest path analysis, you cannot do that thing. Like if you take the shapefile format, shapefile is also the example of non-topological data model. In that one also, no topology information is stored. So if you have to perform the network analysis, first you need to convert that data, that shapefile data into the topological data, and then after only you can perform the network analysis on that data set. So this is one of the problem that you cannot go for the advanced analysis in such type of data models. As a solution of that one, topological data model came. In topological data model, the information regarding the proximity, regarding the neighborhood is stored. Okay. So when we talk about the topological data properties in GIS, there are three properties: adjacency, connectivity, and containment, which are considered to be the topological properties.
Now coming to the topological data model, how the data gets stored over here. In this example, you can see that there are some lines, some polygons are drawn over here. And if you want to store this information in the topological data model, 4 different tables are created over here. First one is arc coordinate data. Second one is arc topology. Third one, node topology. Fourth, polygon topology. Node topology and polygon topology, there is nothing in creating these 2 tables. But yes, in the first and the second one, you have to make sure that the things are consistent with each other. How? Like, suppose in this figure, the number of arcs are 4. As you can see, A1, A2, A3, and A4. Okay. So there are 4 arcs in this diagram, A1, A2, A3, and A4. This one is the undirected graph. There is no, you cannot say that we are moving from N1 to N2 or N2 to N1 because this one is undirected graph. In this case, you can take any as the starting node and any one as the ending node. Like in this example, 4, 5 is taken as the starting node, which means N1, and the end node is 3, 4, 3, which is the N2. Okay, and thereafter the intermediate nodes, which are 4, 8, 8, 8, 8, 1, 4, 1. These are the intermediate X1. Okay, in this manner, the whole table will get filled. Okay, A1, A2, A3, A4, all the values will be stored in this manner. Once you are done with creating this arc coordinate data, okay, this one is the very first table that you are going to create. Once you are done with the arc coordinate data, the second table that you need to create is the arc topology table. Now, this arc topology table will be created according to this previous arc coordinate data. Why? Because in this one, you have to fill the start node and the end node. Whatever you have written over here in this arc coordinate data, what is the starting xy and whatever is the end xy, the same should come in the arc topology table also. So since for the A1 you can see 4, 5, which is N1 is the start, and 4, 3, which is N2 is the end. So start node is N1, end node is N2. Then left and right means left side polygon and right side polygon. Now you are moving from N1 to N2. So when you are moving in this direction, what will be the left? This outside area will be the left portion. This thing is important because you make sure which direction you are moving, N1 to N2 or N2 from N1. So if you see from N2 to N1, in that case, left side will be A. But since as per the table, it is N1 to N2, therefore the left side is blank and the right side is A. Similarly, for the second arc, A2, again 4, 5, 4, 3, N1, N2. Start node is N1, end node is N2. So if you move in this direction, N1 to N2, what is in the right hand side? It is B. Okay, B will come in the right and A will come in the left. For the A3, again, for the A3, it is N1 to N2. What is in the right hand side? It is blank. What is in the left hand side? It is C. Okay. For A4, in this one, the node sequence is different, N2 to N1. So if you are moving from N2 to N1, what is in the right? B. What is in the left? C. Okay. So this is how this arc topology table is created. Thereafter, node topology, you have to identify the node. There are only 2 nodes which are given in this graph, N1 and N2. And then there will be arc. You can write, since it is an undirected one, so you can write any sequence A1, A2, A4, A3, whatever you want. For the polygon topology, there are 3 polygons over here, capital A, capital B, and capital C. In the arc, you have to write it down which arcs are creating that polygon. So for the A, it is A1, A2. For the B, it is A2, A4. For C, it is A3 and A4. Okay. So this is how this whole arc topology data is created. If there any confusion, then you can ask. Yes, Krishna Kumar. मैम यस मैम आर्क A4 के लिए हमने स्टार्ट N1 to N2 क्यों नहीं किया, N2 to N1 ही क्यों किया?
कोई वो नहीं है, ये तो बस एक एग्जाम्पल है जिसके थ्रू यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अनडायरेक्टेड ग्राफ है, आप A2 टू अच्छा, N1 ओके टू मैम, N2 भी मतलब लेना वो चाहें तो भी वो कर चलेगा। सकते हैं। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। बस ध्यान यही बार बार बता रहे हैं, ये ध्यान रखना रहता है कि आपने जो आर कोऑर्डिनेट बना दिया उसी के अकॉर्डिंग आप टोपोलॉजी को बनाइएगा। डायरेक्टेड ग्राफ होगा, यहाँ नहीं है तो यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं, अगर होगा तो उसके अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम GS3 मैप्स में मैम 87 स्लाइड है मैम। डिस्टर्बेंस आ रहा है, फिर से बताइए। रिपीट करिए। मैम एक मिनट मैम। मैम PDF GS3 87 स्लाइड मैम। बताइए। सो आई एंड AC सीरीज, ये टोपो शीट समझ में नहीं आया मैम। इसमें नंबरिंग नहीं समझ में आ रही है आपको? Because audio is not clear, I am taking this thing that the student is not getting the sequence of numbering, so I am repeating over here. This INAC is basically the older series. Nowadays we have the OSM series topo sheets or topographic maps. So, but even in today's time, the numbering system is more or less same. This INAC series topo sheet, this discussion was mainly about how the numbering is given in the Survey of India topographic maps. So as it is given over here, this INAC series, which is the older version, even if I search for this one on the internet, okay, this one is not coming, but yes, on the screen you can find that. Yes. So in this one also you can see this one is showing you the INAC series sequence. This is how the maps are created. INAC series basically gives the information of topographic map. They publishes the topographic maps under this series for the India as well as for the adjacent countries like Pakistan or some nearby Nepal and others. So we are mainly focused upon the, like you can see over here, the Allahabad will fall in the older series. You can see it is in the 63. Okay. The 63 number is for Allahabad. How this division takes place? So this one is the very first level of division where the degree in the latitude and longitude is 4 degree cross 4 degree. You can see the same thing on the top. 68 degrees, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96. Okay. This is what? This is the longitude. Okay. In the latitude also 8 degree, 12 degree, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Okay. You can see this division over here also. So the very first number is showing you the map at 4 degree cross 4 degree interval. Okay. What will be the extent of this map? The very first map extent is 4 degree cross 4 degree.
So this one is at the 1:1 million scale. Its numbering goes from 1 up to 136. Okay. Coming to the next part, which is the 1 degree cross 1 degree sheet. This 1 degree cross 1 degree sheet is at 1:2,50,000 scale. Now see the division. See the division over here. This one is again, this whole square is of 4 degree cross 4 degree. This 55 number is at 4 degree cross 4 degree. It is further divided into 1 degree cross 1 degree sheet. What is the scale of 1 degree cross 1 degree? It is 1:2,50,000. And see how the sequence is given. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. So this is the main thing, that how the sequence is coming. It is written in a vertical manner, A, B, C, D in a vertical manner. Then second column, E, F, G, H. Again, next third column, I, J, K, L. Next again, fourth column, M, N, O, P. This is the main thing that you should remember, that how it is labeled. At 1:2,50,000, the sheet number is labeled as A up to P. Okay. Each of the 4 degree cross 4 degree tile will be divided into the 16 1 degree cross 1 degree tile. You already know about this division, as in the raster data. If you decrease, like in this one, there is a decrease of 4 times. So number of cell will increase by 16 times. Then the next scale is, suppose if you take the D, this one is the 1 degree cross 1 degree sheet. This 1 degree cross 1 degree sheet is further divided into 15-minute cross 15-minute sheet. Okay. So how many 15 cross 15-minute sheet will come from 1 degree cross 1 degree? It will be again 4, means 4 cross 4, that is 16 sheets. So here you can see the division is given over here for the D. How this is further divided into 15-minute cross 15-minute sheet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. What is the scale of this one? It is 1:50,000. Okay. Now further, if you want, it will be further divided into another 1:25,000 at 5 minute, 7 minute, 30 seconds. Okay, this is how this whole INAC series get divided. So the main thing is that you should remember this numbering system, as well as, like suppose if I say that we have the map of 63G7, what will be the scale of that map? So you automatically should know, if it is saying 63G7, it will be at 1:50,000. Okay, so this is all about the INAC series topographic maps nomenclature. If there is still any doubt, you can ask. Ma'am, please share that link of that PDF, ma'am, just now from where you were teaching. It is the NCERT book. I am sharing it. And probably I have already shared this one in our initial classes. You can see this one over here. So these NCERT books are very interesting. They explain the concept in a very simple manner. So this one is chapter 5 about the topographic maps. You can read it from here. Okay. Yes. So is it clear? INAC series numbering? I do not know. Who was asking this question about INAC series? No answer. So I am assuming that this one. Okay. Megawat, is it clear to you? Any other question? Any other question related to GIS? Hello, ma'am. Yes, Praveen.
मैम इक्वेटर डिस्टेंस जो एजिमुथ कोनिकल और सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन है मैम, उसको प्लीज एलैबोरेट। मैम एक बार फिर से इसको डिस्क्राइब कर दीजिए। सो प्रोजेक्शन सिस्टम बेसिकली क्या होता है कि आप जब भी आपके पास 3D अर्थ होती है ना, 3D अर्थ को 2D सरफेस पर आपको कन्वर्ट करना है, क्योंकि मैप तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट नहीं है। मैप तो एक फ्लैट है, पेपर पे ड्रॉ करते हो आप, मैप बना भी चुके हैं अब आप, तो आपको इसका आइडिया है कि मैप जो है वो एक 2 डायमेंशनल एंटिटी है। सो जब भी आप 3D को 2D में कन्वर्ट कराते हैं, इस कन्वर्जन के लिए क्या होता है, आपको एक प्रोजेक्शन यूज करना पड़ता है ना। प्रोजेक्शन अगर आप बुक्स वगैरह में और पढ़ेंगे डिटेल में, तो एक बहुत ही मैथमेटिकल टॉपिक होता है कि प्रोजेक्शन किस तरीके से किया जाता है। यहाँ पर हम लोग ने इसको थ्योरेटिकल वे में पहले सीखा है कि प्रोजेक्शन कैसे किया जाता है। जब भी प्रोजेक्शन किया जाएगा, है ना, जैसे यहाँ पर बताया गया था, यहाँ प्रॉब्लम दिखाई गई थी कि ये कर्व्ड सरफेस है, एलिप्सॉइडल सरफेस है, और यहाँ पर ये मैप का एक स्ट्रेट लाइन से यहाँ मैप का सरफेस दिखाया गया है। यहाँ पर किस तरीके से कहीं पर यहाँ ए और बी देखिए, ए और बी जो है वो कंप्रेस हो जा रहा है, स्मॉल ए स्मॉल बी और कैपिटल ए कैपिटल बी को देखिए, तो कैपिटल ए बी ज्यादा बड़ा है उनके बीच की दूरी, और स्मॉल ए बी के बीच की दूरी कम है। जब प्रोजेक्ट किया जा रहा है फ्लैट सरफेस पर एलिप्सोइडल सरफेस को, तो वो छोटा हो जा रहा है, कंप्रेस हो जा रहा है। वहीं डी और ई को देखिए, कैपिटल डी और ई जो कि कर्व्ड सरफेस पर बना है, और स्मॉल डी ई जो कि फ्लैट मैप सरफेस पर बना है। अगेन डी और ई एलिप्सोइडल सरफेस पर उनके बीच की दूरी कम है, मैप सरफेस पर वही दूरी बढ़ जा रही है। यहाँ पर यह दिखाने की कोशिश करी जा रही है कि डिस्टॉर्शन जो है मैप प्रोजेक्शन में अनअवॉइडेबल है, उसको उससे बचा नहीं जा सकता, डिस्टॉर्शन मैप में आएगा ही आएगा। इसमें 4 प्रॉपर्टीज बताई गई थी, एरिया, शेप, डिस्टेंस, डायरेक्शन। किसी एक प्रोजेक्शन प्रॉपर्टी को आप प्रिजर्व करा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन चारों को करा सकते हैं। ठीक है, इसमें पहला अलग अलग एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए थे। पहला एरिया प्रिजर्विंग, जिसको होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन भी कहा जाता है। होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन में आप देखते हैं कि एरिया प्रिजर्व हो रहा है यहाँ पर इन सर्कल्स को देखिए, इन सर्कल्स में आप डिस्टॉर्शन क्लियर कट देखते हैं कि सारे सर्कल अलग अलग शेप के आ रहे हैं। तो जब आप एरिया बचाने की कोशिश करते हैं तो शेप बिगड़ जाता है। शेप प्रिजर्विंग, जिसको कि कॉन्फॉर्मल प्रोजेक्शन या ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन भी कहा जाता है, इसमें क्या होता है, यहाँ शेप तो प्रिजर्व हो गया, लेकिन इन सर्कल्स की साइज को अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ पर पूरा का पूरा डिस्टॉर्शन दिख रहा है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल जो दिखाया जाता है, यहाँ पर साउथ अमेरिका देखिए, हमने अपना कर्सर साउथ अमेरिका पर अभी रखा हुआ है, ये साउथ अमेरिका देखिए, और ऊपर नॉर्थ अमेरिका के भी ऊपर ये ग्रीनलैंड देखिए। इन दोनों की साइज में आप डिफरेंस देख रहे हैं। यहाँ पर अभी इस प्रोजेक्शन में साउथ अमेरिका छोटा लग रहा है, जबकि एक्चुअल में साउथ अमेरिका इससे बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर यही प्रॉब्लम आती है कि जब कन्फॉर्मल शेप प्रिजर्विंग पे जाते हैं, शेप प्रिजर्व हो जाएगा लेकिन एरिया डिस्टॉर्ट हो जाएगा। अगला है डिस्टेंस प्रिजर्विंग, इक्विडिस्टेंस। यहाँ पर देख सकते हैं डिस्टेंस प्रिजर्व हो रहा है, शेप डिस्टॉर्ट हो जा रहा है। इसी तरीके से डायरेक्शन प्रिजर्विंग, जिसको एजिमुथल प्रोजेक्शन भी कहा जाता है। तो ये प्रॉपर्टीज, प्रिजर्विंग प्रॉपर्टीज के बेसिस पर मैप प्रोजेक्शन आप लोग ने देखा। नेक्स्ट, यहाँ पर मैप प्रोजेक्शन डेवलपिंग सरफेस के बेसिस पर है। डेवलपिंग सरफेस मतलब यहाँ पर एक अज्यूम किया जाता है कि अर्थ क्या है, एक ट्रांसलूसेंट मटेरियल की बनी हुई है, या अर्थ को एक ग्लोब की तरह अगर आप सोचो कि ग्लोब एक अर्थ को डिपिक्ट कर रहा है, एक स्फेरॉइडल शेप का एक ग्लोब है, ट्रांसलूसेंट मटेरियल का बना हुआ है, जिसमें जहां पर की वाटर है वहां से लाइट पास हो जा रही है, और जहां पर लैंड है वहां से लाइट पास नहीं हो पा रही। हमने मान लिया कि एक लाइट सोर्स को हमने इस ग्लोब के अंदर रख दिया, और इस ग्लोब को ले जाकर के एक डार्क रूम के अंदर, एक अंधेरे कमरे में हम इस ग्लोब को ले जाकर के रख देते हैं। क्या होगा, जैसे आप किसी अंधेरे कमरे में इसको रखेंगे, आप देखेंगे कि जहां जहां पर वाटर है वहां से लाइट आ जा रही है, और जहां जहां पर लैंड है वो डार्क कलर में जो कमरे की दीवारें हैं वहां पर वो प्रोजेक्ट होता हुआ दिख रहा है। अब जहां जो यहाँ पर हम लोग
एक कमरे की दीवार कह रहे हैं, उसका शेप अलग अलग हो सकता है। वो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में आ सकता है, मतलब ग्लोब के चारों ओर डेवलपिंग सरफेस सिलेंड्रिकल फॉर्म में भी रैप हो सकती है, कोनिकल फॉर्म में भी आ सकता है, और एजिम्यूथल या प्लेनर फॉर्म में भी आ सकता है। जो अभी स्क्रीन पर आप प्रोजेक्शन देख रहे हैं, ये सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन है। सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन के केस में डेवलपिंग सरफेस ग्लोब के अराउंड सिलेंड्रिकल शेप में रैप होती है। इसमें जब प्रोजेक्ट कराया जाएगा तो इक्वेटर पे तो सबसे सही है, क्योंकि इक्वेटर पर ये सिलेंडर टैंजेंट है, अर्थ को टच कर रहा है। लेकिन बाकी जगहों पर ये टैंजेंट नहीं है। जब हम इस तरीके के प्रोजेक्शन को करते हैं, ये इक्वेटर के नजदीक तो लीस्ट डिस्टॉर्शन देता है, इसी कारण से ये नियर इक्वेटर कंट्रीज के प्रोजेक्शन के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर आप इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे, वैसे वैसे यहाँ पर जो डिस्टॉर्शन है वो बढ़ता जाएगा। सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन में कंप्लीट अर्थ कवर करी जाती है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम जो देखने लायक वो ये है कि यहाँ पर जितने भी लैटिट्यूड बनेंगे, है ना, जितने भी लैटिट्यूड बनेंगे उनकी लेंथ इक्वेटर के बराबर हो जाती है, जो कि ऑब्वियसली गलत है, क्योंकि लैटिट्यूड की साइज लेंथ एक समान नहीं रहती है। लैटिट्यूड सबसे ज्यादा इक्वेटर पे होता है, और जैसे जैसे वो पोल की ओर मूव करता जाता है, ग्रेजुअली जो लैटिट्यूड होता है उसकी लेंथ कम होती जाती है, ठीक है, और टॉप पर पहुंचते पहुंचते वो एक पॉइंट के बराबर रह जाती है। लेकिन जब सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन होता है तो सभी लैटिट्यूड सेम लेंथ के हो जाते हैं। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप इक्वेटर से अवे जाएंगे डिस्टॉर्शन बढ़ता जाएगा, और मैक्सिमम पोल के पास में तो इनफाइनाइट स्केल हो जाता है। ये प्रोजेक्शन सिस्टम कंप्लीट अर्थ को कवर करता है, एक ग्रिडेड फॉर्म में ये डेटा को प्रोवाइड कराता है। अब दूसरा प्रोजेक्शन कोनिक प्रोजेक्शन होता है। इसमें इस तरीके के कोन लाइक शेप को रैप किया जाता है अर्थ के चारों ओर। इस कोन में दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो एक पॉइंट पर टैंजेंट होगा अर्थ के, ठीक है, ये अर्थ को किसी पॉइंट पर टैंजेंट होगा, या ये किन्हीं दो पॉइंट पर सीकेंट होगा, मतलब अर्थ को काटता हुआ निकलेगा। तो अर्थ को कट करेगा तो दो पॉइंट पर कट करेगा। तो ये दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो टैंजेंट होता है या तो वो सीकेंट होता है। यहाँ पर जिस पॉइंट पर कोण टैंजेंट या सीकेंट होता है, उसके पास से जाने वाली या उससे जाने वाली जो लैटिट्यूड होती है, वो क्या यहाँ पे यूज होता है, वो लैटिट्यूड जो होती है उसका स्केल जो होता है वो ट्रू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोनिक प्रोजेक्शन तभी यूज किया जाता है जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हमको एक पॉलीकोनिक प्रोजेक्शन भी यहीं से बनता है कि जिस पॉइंट पर हम टच कराते हैं वहां पर ट्रू स्केल हो जाता है। तो वहां पर ये सही होता है। इक्वेटर पे ये डिस्टॉर्शन इसमें बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ना तो ये इक्वेटोरियल रीजन के लिए होता है, ना तो पोलर रीजन के लिए होता है। पोल और इक्वेटर के बीच में जहां कहीं भी आप कोन को टैंजेंट या सीकेंट करा सकते हैं, वहां पर कोनिक प्रोजेक्शन यूज होता है। इसमें ये लैम्बर्ट कन्फॉर्मल कोनिक प्रोजेक्शन, अमेरिकन पॉलीकोनिक प्रोजेक्शन भी कहा जाता है, बहुत ही पॉपुलर प्रोजेक्शन सिस्टम है जो कि यूज होता है। अच्छा, एक चीज और, कोनिक प्रोजेक्शन में कंप्लीट अर्थ कवर नहीं हो पाती है, ठीक है। और यहाँ पर जब आप अनरैप करते हो, अगर इस डेवलपिंग सरफेस को बीच से काट करके खोलेंगे, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूड किस तरीके से दिखाई देंगे आपको, इंक्लाइंड लाइंस के फॉर्म में दिखाई देगी, और जो लैटिट्यूड होते हैं वो आर्क के फॉर्म में, ठीक है, कंसेंट्रिक आर्क्स के फॉर्म में हमको दिखाई देते हैं। तीसरा यहाँ पर ऑप्शन आता है प्लेनर प्रोजेक्शन का। प्लेनर प्रोजेक्शन में कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में दिखाया गया है, इस तरीके से डेवलपिंग सरफेस को अर्थ के ऊपर लगाया जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा पोल के ही पास लगाया जाए, ये कहीं से भी हम इसको टैंजेंट करा सकते हैं। तो ये एक टिपिकल एग्जाम्पल कि अर्थ के ऊपर यहाँ पर इस तरीके से टैंजेंट कराया जाएगा। यहाँ पर जो लॉन्गिट्यूड होता है, ठीक है, वो रेडियली आउटवर्ड जाती हुई लाइंस के तौर पे दिखाई देता है, जबकि लैटिट्यूड कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में यहाँ पर बन करके आता है। अजीमुथ प्रोजेक्शन ज्यादातर, या प्लेनर प्रोजेक्शन जिसको कहते हैं, ये डायरेक्शन प्रिजर्विंग होते हैं। तो
तो यहाँ पर पर्टिकुलर पॉइंट जहां कहीं भी ये सीकेंट होता, सॉरी टैंजेंट होता है, वहां पर इसको प्रेफर कराया जाता है। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्शन में, प्रोजेक्शन अलग अलग, मतलब प्रोजेक्शन कोई ऐसा नहीं कि 4-5 प्रोजेक्शन है, थाउजेंड्स ऑफ प्रोजेक्शन है, इनका कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है, बट एक ये जेनरिक क्लासिफिकेशन यहाँ पर आपको दिखाया गया। पहला, किस प्रॉपर्टी को प्रिजर्व किया जा रहा है, दूसरा डेवलपिंग सरफेस कैसी बन रही है, तीसरा एस्पेक्ट, एस्पेक्ट मतलब किस तरीके से डेवलपिंग सरफेस को ग्लोब के चारों ओर रैप किया जा रहा है, अर्थ की पोलर एक्सिस और जो भी है, जैसे सपोज सिलेंडर है तो सिलेंडर के एक्सिस और पोलर एक्सिस के बीच में कितना डिग्री बन रहा है, उसके बेसिस पर ये एस्पेक्ट यहाँ पर बताया जाता है। यहाँ पर 3 एस्पेक्ट है, नॉर्मल एस्पेक्ट, ट्रांसवर्स एस्पेक्ट एंड ऑब्लिक एस्पेक्ट। ठीक है, नॉर्मल एस्पेक्ट में क्या होता है, द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर इज कोइंसिडेंट टू द पोलर एक्सिस। यहाँ पर इसमें देख लीजिए, यहाँ पर अर्थ का जो एक्सिस है और कोन का जो एक्सिस है, वो दोनों के दोनों कोइंसाइड करते हैं, उनके बीच में सेम 0 डिग्री का एंगल होता है। इस तरीके के प्रोजेक्शन को नॉर्मल प्रोजेक्शन कहा जाता है। दूसरा, ट्रांसवर्स प्रोजेक्शन, इस केस में क्या होता है, सिलेंडर के एक्सिस और पोलर एक्सिस के बीच का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। यहाँ पर हम लोगों ने आगे सीखा था यूटीएम प्रोजेक्शन, है ना, वहां पर ट्रांसवर्स यही टर्म यूज हुआ था। तीसरा, ऑब्लिक प्रोजेक्शन, ऑब्लिक मतलब 0 और 90 डिग्री के बीच में अगर कोई एंगल है तो उसको ऑब्लिक प्रोजेक्शन बोला जाएगा। तो नॉर्मल एस्पेक्ट, ट्रांसवर्स एस्पेक्ट एंड ऑब्लिक एस्पेक्ट, यहाँ पर ये 3 हमारे पास में पॉसिबिलिटी है। अगला यहाँ पर व्यू पॉइंट, मतलब लाइट सोर्स कहाँ पर रखा है, यहाँ पर 3 ऑप्शन हमारे पास में होते हैं। लाइट सोर्स ग्लोब के सेंटर पर रखा जाता है, जिसको ग्नोमोनिक प्रोजेक्शन भी कहा जाता है। इसमें देखिए सेंटर, ग्लोब के सेंटर के अंदर यहाँ पर माना जाता है। दूसरा, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन, जिसमें अपोजिट पोल के पोजीशन पर लाइट सोर्स माना जाता है। और तीसरा, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, जिसमें मान लिया जाता है कि लाइट सोर्स इन्फिनिटी पे सिचुएटेड है और पैरेलल रेज लाइट्स की आ रही है। तो ये 3 अलग अलग प्रोजेक्शन हम लोग ने देखे। उसके बाद मर्केटर प्रोजेक्शन यहाँ पर दिखाया गया था। फाइनली ट्रेवर्स मर्केटर एंड देन यूटीएम। यूटीएम का डिस्कशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब हम लोग प्लेनर प्रोजेक्शन की बात करते हैं, 2 तरीके के या 3 तरीके के क्वेश्चन में पूछा गया था। स्पेशल रेफरेंसिंग कितने तरीके से हो सकती है, एक ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में, एक प्लेनर कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में और एक नॉन प्लेनर कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में, है ना। ज्योग्राफिक में तो, ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो अभी तक सब काम करते आए हैं। प्लेनर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो पीसीएस होता है, जहां पर प्लेनर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों होता है, जब कभी भी आपको लेंथ मेजर करनी है, एरिया मेजर करना है, उस केस में प्लेनर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे हमको जाना पड़ता है। और प्लेनर कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा होता है, कई सारे हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे पॉपुलरली यूज होता है वो यूटीएम यूज होता है। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रेवर्स मर्केटर, जिसका डिटेल हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि इसमें माना जाता है कि ग्लोब के चारों ओर कोई एक बार नहीं बल्कि 60 टाइम्स यहाँ पर ग्लोब के चारों ओर सिलेंडर को मूव कराया जाता है। तो उससे टोटल 60 यूटीएम जोन्स बनते हैं। यूटीएम कोई 0 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 0 डिग्री साउथ तक कंप्लीट कवरेज यहाँ पर नहीं ली जाती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका जो होगा, तो यूटीएम की जो लिमिट होती है वो नॉर्थ में 84 डिग्री नॉर्थ और साउथ में 80 डिग्री साउथ तक होती है। 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ तक नहीं होती है। 84 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 80 डिग्री साउथ तक इसका एक्सटेंट होता है। इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स आए थे, फॉल्स ईस्टिंग क्या होता है, फॉल्स नॉर्थिंग क्या होता है। तो ये पूरा का पूरा यूटीएम यहाँ पर हम लोग ने देखा था। ठीक है, तो ये टोटल प्रोजेक्शन सिस्टम, जिसको कि हम लोग ने अलग अलग प्रोजेक्शन सिस्टम्स देखे। प्रवीण, क्लियर है अब आपको? यस मैम। अच्छा मैम एक क्वेश्चन और है, टोपोलॉजी। हाँ पूछे। टोपोलॉजी मैम। क्या टोपोलॉजी?
मैम टोपोलॉजी डिफिनेशन वगैरह समझ में, वेक्टर और का नाम जब मैम स्टार्टिंग से करते हैं तो वही टोपोलॉजी का डिफिनेशन पढ़ रहे थे, वही क्लियर नहीं हो रहा था। क्या नाम, दो रास्टर को लेयर वगैरह ऐड कर रहे थे। ओके, वेट करें।
Ma'am, there is no voice from your end, ma'am. I'm not getting any sound. Okay. Am I audible now? Now audible, ma'am. Yes, ma'am. सो टोपोलॉजी के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि सपोज अगर आप किसी भी रबर शीट पर कुछ ड्रॉ करते हैं, ओके, या अगर आप ऐसे सोच लो कि अगर आप किसी बलून के ऊपर कुछ ड्रॉ करते हैं, एक सर्कल बनाया, उस सर्कल के अंदर एक और सर्कल बना दिया और उस बलून को आपने उसके अंदर एयर फिल करी, तो जो प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होगी, जैसे सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल बना हुआ है, वो उसके अंदर ही रहेगा, उसके बाहर नहीं आ जाएगा। तो इस तरीके की प्रॉपर्टीज जो स्ट्रेच करने पर, बेंड करने पर, स्केल चेंज करने पर नहीं चेंज होती, उनको टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी कहा जाता है। बहुत सारी इसमें होती है, जैसे एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर लाई करता है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को कंटेन करता है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को टच करता है। इस तरीके की कई सारी यहाँ पर प्रॉपर्टीज बनती है, जिसको ब्रॉडली हम लोग 3 एलिमेंट में बताते हैं: एडजेसेंसी, कनेक्टिविटी एंड कंटेनमेंट। एडजेसेंसी मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के बगल में है, लेफ्ट में है, राइट में है, इस तरीके से हमने एडजेसेंसी बताई। कंटेनमेंट, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर है। तीसरा कनेक्टिविटी, कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से लिंक्ड है। तो ये टोपोलॉजी में 3 तरीके की प्रॉपर्टी हो गई: एडजेसेंसी, कनेक्टिविटी एंड कंटेनमेंट, जिनको कि हम लोग यहाँ पर बताते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ करके भी दिखाए गए थे कि किस तरीके से ये एक पहला वाला लेफ्ट में एक टोपो शीट यहाँ पर है, और यहाँ रबर शीट पर एक कुछ पॉलीगन्स ड्रॉ किए गए हैं। उसके बाद में यहाँ पर उसे डिस्टॉर्ट किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए और बी एडजेसेंट टू ईच अदर है, वो अभी भी वही है। डी जो ई है वो डी के अंदर कंटेन्ड है, वो आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। बट कुछ चीजें जैसे उसका शेप है, उसका साइज है, उसका जो डिस्टेंस है, ये सारी चीजें जो है वो डिस्टॉर्ट हो जा रही है, तो वो नॉन टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज कहलाएंगी। यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू भी एक्सप्लेन किया गया था। कोई वैंकूवर इज ऑन द बाउंड्री ऑफ कनाडा एंड यूएस, मिनियापोलिस इज इनसाइड द मिनेसोटा स्टेट, मेडिसन इज आउटसाइड द मिनेसोटा स्टेट। इस तरीके कई सारे यहाँ पर टोपोलॉजिकल ऑपरेशन भी बताए गए थे, नॉन टोपोलॉजिकल भी दिखाए गए थे, कि जो डिस्टेंस है, डायरेक्शन है, लेंथ है, पेरीमीटर है, एरिया है, ये सारे नॉन टोपोलॉजिकल के एग्जाम्पल है जो कि डिस्टॉर्ट हो जाएंगे। क्लियर है प्रवीण? मैम Any other question? There's no other question, so I am coming to the last, this GIS application and case studies. So this PDF is all about the applications of GIS. You have already learned the theory related to the GIS, and this section you will find how the GIS is applicable. You have to go a detailed study on this one. You have to read this complete PDF, so it will give you the idea how the GIS is used in different fields. I'm just giving an overview of this part. First one is the GIS is in government and public service. So if we see the initial years of GIS, about the development of GIS, it is mostly about the government. The Canadian GIS, Canadian Geographic Information System, it was developed for the Canadian government by the Roger Tomlinson and his team. So main purpose of that one was regarding the Canadian land inventory management. In this example, you will find a very detailed table over here in which the different applications are taken: inventory application, policy analysis application, management or policy making application.
So in the different sectors, you will find there are so many different sectors of the government where these things could be used. If you take the very first one, which is the inventory application, it is all about how the data will be collected and maintained. Like suppose economic development, location of major business and their primary resource demand. Transportation, identification of sanitation truck routes, capacities and staffing by area, identification of landfill and recycling sites. They are mostly about the location, inventory of housing stock age, condition status, durability, and demographics. The very first application of GIS in all the fields will give you the location of the things. In whichever application area you are working, you will find the inventory creation over there, where the inventory of all the resources and the related attribute is stored. Okay. Like suppose if there is any infrastructure, any transportation related thing, the information of all the road, sidewalk, bridges, whatever is there, the inventory application will be there. So here GIS will be useful. The second part is the policy analysis application. Okay, like for the economic development, analysis of resource demand by potential local supplier. Transportation and service routing, analysis of potential capacity strain given developed in certain areas, analysis of accidental patterns by type of site. Housing, analysis of public support for housing by geographic area, drive time from low income areas to needed service facilities, etc. So basically it is about policy analysis, means it is mostly about the analysis of the existing things, okay, and identification of what will be the point of demand and other things. Third one is the policy making. Policy making means it is one of the major application is site selection, where you can place a new facility, where you can start a new facility, something like that. If you see the read the application over here, informing business of availability of local supplier, identification of ideal high density development areas based on a criteria such as established transportation capacity, analysis of funding for housing rehabilitation, location of related public facilities, planning for capital investment in housing based on population growth projections, infrastructure analysis to schedule maintenance and expansion, health analysis to pinpoint possible source of disease, tax maps projecting tax revenue change due to land use changes, human services, facility siting, public transportation routing, program planning, and place-based social intervention. So there are so many different applications that you can find in all the fields of governance. Okay. Thereafter, they have given a case study of GIS in tax assessment. Okay. So in this one, again, they have used different software. So they have taken the example of US over here, and then they have used different software in this particular example. And yes. So in this one, if you read this example of GIS in tax assessment, they have basically used the Tobler's first law of geography, and they have done the proximity analysis. Based upon that one, they have decided the tax. Okay. So text mapping and assessment is a classic example of the value of GIS in a local government. In many countries, local government agencies have a mandate to raise revenue for property taxes. The amount of tax payable is partly or wholly determined by the value of taxable land and property. A key part of this process is evaluating the value of land and property fairly to ensure equitable distribution of communities' tax burden. In United States, the task of determining the taxable value of land and property is performed by the tax assessor office, which is usually a separate local government department. The valuation office agency fulfill a similar role in UK.
the tax department can quickly get overwhelmed with request of valuation of new properties and protest about existing valuation. So in this one, they are taking the example of similar location, the similar condition, and on the basis of that one, they have done the tax assessment. So this is how the GIS has been used over here. I'm just trying to find out the exact place where they have written. So it is given over here. Critical to the success of tax assessment process is a high quality, up-to-date geographic database that can be linked to a CAMA system. CAMA is basically computer assisted map appraisal, CAMS system. They have this system over here, and they have linked the information of GIS with this system so that they will get an up-to-date geographic information, and on the basis of that one, they are able to assess about the tax. Okay. And then thereafter, application of GIS in business and service planning. This one is a very interesting application. If you have read this one, they are giving a very good example of the application of GIS over here. Okay. I'm just reading it out quickly. Business and service planning application focus upon the use of geographic data to provide operational, tactical, and strategic context to decisions that involve fundamental question where geodemographic is shorthand term for composite indicator of consumer behavior that are available at the small level. Geographic data are frequently used in business application to identify variation in indices in customer types. They are often supplemented by lifestyle data on consumption, choice, and shopping habits of individuals to fill out questionnaire or participate in store loyalty program. The term market area analysis describes the activity of assessing the distribution of retail outlet related to the greatest concentration of potential customers. The approach is increasingly being adopted to improve public service planning in areas such as health, education, and law enforcement. The tools of business application typically range from simple desktop mapping to sophisticated decision support system. Tools are used to analyze and inform the range of operational, tactical, and strategic functions of an organization. These tools may be part of a standard GIS software or may be developed in-house by the organization, or they may be purchased as a business solution product. Operational function concern day-to-day processing of routine transaction and inventory analysis in an organization, such as stock management. Tactical operation requires the allocation of resources to address specific problems as store sales promotion. And third, we have already learned the 3 levels in triangle of power. Operational function, which is at the base, day-to-day thing, tactical, a short-term thing, and then strategic, which will affect the long-term goals of any organization. So tactical function contribute to the organization's long-term goals and mission and entails problems such as opening of new stores. Okay. Now they are giving the example over here. In this example, what they have given, that they are basically telling us about how to inform the people about their product or how to do the advertisement. In any of the organization, any of such type of shopping areas, one of the way of doing the advertisement is by, suppose they can send the pamphlet through newspaper. This is one way of doing the marketing about information, informing people about their latest products, about any type of discount and other things. But the problem is, if you give pamphlet uniformly to all the people, there will be a large number of people who are not going to that store. So a lot of money will get wasted in advertising the thing to the people who are not interested in them. So they have tell that how the lifestyle data is used, how they are getting the lifestyle data. Like whenever you go to a mall or any such type of shopping centers, you will find that you will have to register over there. They will ask you to create some customer loyalty card, some green card, blue card, something like that.
Whenever you make a purchase, that card is attached to your mobile number. That gives you a unique identity, isn't it? Your mobile is unique. So that mobile number will give you a unique identity. Any type of shopping which is done on that card will come in front of that organization so that they have the knowledge about the lifestyle habits of that very customer, because different people have different financial condition, and they will make the things, they will purchase the thing according to that one. Everything has a lot of, like, suppose if you are going to buy some tea leaf, they will be where all type of prices will be there of a simple tea leaves. There is a lot of things that depends upon your buying habit, upon your lifestyle, and based on that one the pinpoint advertisement could be done. Okay, because if somebody is saying that this is a very interesting type of tea bags, this one tea bag cost rupees 10. So a common person is not going to buy a 10 rupees tea bag if there is a lot of, there are at least 2 times in every household there is a tea. So if they are making tea for a 5 people, so they are spending at least 50 rupees on the tea bags. Okay, so common man is not going to purchase that thing. But yes, if there is somebody who has a lot of money, it doesn't matter to them. So if there is a pinpoint advertisement, if you are giving the ad of tea leaves of 10 rupees per bag to a common person, he is not going to purchase that one. In this example, they are showing how it is used. Okay, so they have taken a example of Tesco. So Tesco is by some margin the most successful grocery retail in United Kingdom, and has used its knowledge of some of the house market to launch successful initiatives in Asia and the developing markets of Eastern Europe. Achieving real sales growth in its core business of groceries is difficult, particularly in view of a strict national planning regime that prevents widespread development of new stores and legislations to prevent the emergence through acquisition of local spatial monopolies of supply. One way in which Tesco has succeeded in sustaining market growth in the domestic market in these circumstances is through strategic diversification into consumer durables and clothing in the larger stores. A second driver to growth has been the successful development of a store loyalty card program that rewards members with money off coupons or leisure experience around according to their weekly spending. This program generates lifestyles data as a very useful byproduct which enables Tesco to identify consumption profile of its customers. This enables the company to identify, for example, whether customers are value driven and should be directed to budget food offerings, or whether they are principally motivated by the quality and might be encouraged to purchase goods from the company's finest range. This is a very powerful marketing tool. Although, unlike geodemographic discriminators, these data tell the company rather little about those households that are not their customers or the products that their own customer buy elsewhere. A third driver to growth entails the creation or acquisition of much smaller neighborhood stores. These provide a local community service and are not very intrusive on the retail landscape, and thus much easier to create within the constraint of the planning system. The method they are giving over here, the location is in suburban residential neighborhood, and as such it was anticipated that customer base would be mainly local, that is resident within 1 kilometer radius of the store. A budget was allocated for promoting the new establishment in order to encourage repeat patronage, and an established means of promoting a news store is through pamphlet drop or enclosure with free local newspapers. However, such a tactical intervention are limited by the coarseness of distribution network. Most organizations that deliver circulation will only undertake delivery for complete postal sector. So this represent a rather crude and wasteful medium. A second strategy would be use GIS to identify all of the household within a 1 kilometer radius of the store.
Each pin code is assigned to grid reference of the first mail delivery point on mail walk basis. Thus, one of the quickest way of identifying the relevant address entails plotting the unit code, postal code address and selecting those that lie within the same search radius, matching the unit postal codes with full postcode address file, then suggests that there are approximately 3,236 household residents in the search area. Each of these addresses might then mail a circular, thus eliminating the largely wasteful activity of contacting around 16,800 households that were unlikely to use the store. Yet even this tactic can be refined, sending some same packet of money of coupon to all 3,236 households assumes that each has identical disposable income and consumption habit. There may be little point, for example, domestic tea drinker to buy premium tea leaves or vice versa. Thus, it makes sense to overlay the pattern of geodemographic profile onto the target area in order to tailor the coupon offering to the different consumption pattern of blue-collar enterprise neighborhood versus those classified as belonging to suburban comfort, for example. There is a final stage of refinement that can be done for this analysis. Using its lifestyle data, Tesco can identify those households who already prefer to use the chain despite the previous non-availability of local convenience store. Some of these customers will use Tesco for their main weekly shop, but may top up with convenience or perishable goods from competitor. Such household might be offered stronger incentives to purchase particular range of goods from new store without the wasteful activity of offering coupon toward purchases that are already made from Tesco in the weekly shop. Scientific foundation same Tobler's first law of geography. Okay. Thereafter, there are the different application of GIS in geosciences, GIS in engineering, GIS in marketing and finance. Then searching for sites. Yes, site selection is one of the very useful application of GIS. In this particular example, they are showing the application of GIS, that how GIS will be useful for the radioactive waste disposal. This is a very big problem because nobody wants a dumping site of radioactive waste in the neighborhood. So this is a very sensitive issue. The people are not agree. The people are usually hostile towards such type of dumping places. So in this very example, they have given a very detailed discussion about the disposable sites. Okay, that there was a government who is trying to make a disposable site because of the people protest. They have created a committee, and that committee has identified several criteria over there. Okay, so some of them are given over here, like hydrology, population distribution, and accessibility are the example of important siting factors. Okay. Thereafter, they have shown that how the overlay analysis could be used over here. Okay. So this using GIS for siting NDA based site. So in this one, identify relevant siting factors, collect appropriate data and digitize, identify siting criteria map, overlay all the maps. Thereafter, you have to check examine output. If it is okay, then you will find the final potential site. If no, then the process will be repeated. So in this one, the overlay analysis will be used. So here you can see the radioactive waste case study, and here the 4 factors: geology, population, transport, conservation criteria. All these have been taken and the maps are created. Okay, some more near surface disposal, and so total 6 criteria have been taken, and based upon these 6 criteria, they have done the overlay and identified those sites that are meeting all the criteria. Okay. So this is how they have used the waste disposal site selection.
Thereafter, there is another example regarding the evaluation of land use planning. Again, the same overlay thing was given in this example also. The different overlays are, different criterias are created. Okay. See this case study. This one is, this methodology making is important. In the next to next semester, when you start your thesis work, you have to make a methodology of your work. In any of the project, in any of the thesis, we have to create a methodology. Methodology means how we are going to achieve those objectives. So as you can see over here, the methodology flowchart is given. Okay. So in this example, they are trying to identify the conservation zones. Okay. In this example, they are identifying the conservation zones. For this purpose, this methodology is created. So first of all, identify the relevant data. That relevant data could be collected from remote sensing through images. It can be from the topographic maps. It can be done from the ecological maps from fieldwork. So if you are having a remote sensing data, suppose you have an image, you can find the land cover, what is present over there. If you have a topographic map, you can digitize and collect your data. If you have done the fieldwork, again, you will have a digitized data over there. Then you can do the overlay, and whatever the conditions are there, all these have been placed. And finally, the new conservation zones have been established over here. Then another example is of new home, finding new home. We have already done this discussion earlier. In the previous term, when we were discussing about the rich picture, about the root definition over there, you have learned about this new home house hunting problem. In this particular example also, there is a house hunting problem, and we have already seen this one. So whatever the criteria are, they are listed. According to those criteria, the maps are created. Once all the data set are created, if direct data is available, then it's okay. Like the one of the criteria which states low crime rate. If such data is not available, what they are doing, they are taking insurance zones as a surrogate measure. They cannot have a low crime rate data, but they are using insurance information in order to extract that one. And finally, once all the criteria are collected, the overlay operation is done, and thereafter new houses have been identified. Okay. So you can see the same over here also. Okay. Railway constraint, countryside constraint, proximity to road, proximity to school. So this is how all these things are created. And finally, after the overlay analysis and doing the reclassification, the final output is coming like this way. Okay. So this one was the house hunting problem. Then there is the application of GIS in emergency management, how different types of emergency could be there, and how GIS could be used in the planning, in the evacuation. Okay. Everywhere the GIS could be used in the emergency management. So these are the different applications. You can read about them. They are more or less, it's like reading. You have to read it so that you can get an idea how the different problems could get sorted out with the help of GIS. Okay. So these are not, means these are some of the examples of GIS. Apart from that one, you can read through the book. You can read the recent research papers. Through that one also, you can get an idea about the applications of GIS, how GIS is used nowadays in a day-to-day life, how the GIS is used. Like, recently there is a lot of discussion about the COVID. So there also you will find a lot of spatial applications, like with the help of GIS analysis, they have done the uh, cluster analysis, spatial cluster analysis. They have shown the geographic models of that one, that in which area they can project about these are the possible zones where there will be more intense spread of the disease. Okay. So everywhere, whenever you have to find out the recent development that is taking place, refer to the journals. They will give you a very good idea even about different type of operations that they are using. Okay. So this is all about the GIS technology and about the application of that one. Okay. So that's it from my side. Anything from your side? Any questions?